Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Today I'm starting another series of building construction MCQs from engineer Azhar Badsha. The skills that is straight away coming from my heart towards you to learn and to build these high buildings and skyscrapers. The thickness of a reinforced brick partition wall is generally kept 5 centimeter, 10 centimeter, 15, 20 or 25 centimeter. So the thickness is kept 10 centimeter. Okay, why? Let me explain you. It is asking you reinforced. One is a simple brick wall, simple, simple brick wall. One is simple brick wall thickness, which is consideration. One is a reinforced. When it is reinforced, it means RCC steel bars has been involved in that. How many steel bars are there? Write down in the comment box if you can know, and their diameters, thickness, and and numbers, and inches as well. Write down in the comment box. So when the reinforced is being involved, it means it's a RCC brick partition wall. It's having a brick as well as a RCC. So its thickness is 10 centimeter. Okay. So 10 centimeter is equal to 3.93 inches, which is almost equal to 4 inches, which is less than half a feet, 6 inches. Because when you divide 10 centimeter by 2.54 centimeter, it will give you 3.93 inches as an accurate answer according to this software and this platform, which is the IndiaBex. So according to this software, this platform, which is IndiaBex, so according to this, it's 10 centimeter, which is 4.93 inches. No, it's 3.93 inches. So I will take approximately, I'll take approximately 4 inches, right? Yep. So this is the answer. If you can see, this is simple brick masonry, but it involves RCC bars or RCC mesh or RCC net or steel mesh, steel net. It's a reinforced. You can see it's easily, you can see over here, this portion and this portion is having, so it's more costly rather than the normal brick masonry because it's a RCC, it's a reinforced brick masonry, right? देखिए brick partition wall जो है वो तो एक अलग चीज़ है. Brick partition wall हम frame structure में यूज़ करते हैं क्योंकि इसमें basically जो लोड होता है वो कॉलम्स पे होता है, ठीक है? जो लोड होता है वो बेसिकली कॉलम पे होता है, ठीक है? हाँ जी, उस केस में तो ये मैं उस केस की बात कर रहा, लेकिन जो आम बिल्डिंग्स होती हैं उसमें लोड वॉल्स पे होता है अगर वो फ्रेम स्ट्रक्चर नहीं हो. लेकिन जो ब्रिक पार्टीशन वॉल है वो हम फ्रेम स्ट्रक्चर में यूज़ करते हैं. लेकिन रीइंफोर्स्ड ब्रिक पार्टीशन वॉल उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर होती है, 10 सेंटीमीटर थिकनेस, ठीक है? उसकी थिकनेस 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है? 100 उसकी थिकनेस होती है, ठीक है? विच इज़ 3.93 इंचेस नियरली इक्वल टू. तो इसमें क्या होता है, इसमें एवरी थर्ड और फोर्थ कोर्स में हम क्या करते हैं, RCC स्ट्रैप्स प्रोवाइड करते हैं, RCC की पीसेस प्रोवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू अ डिज़ाइन and according to the specification and BOQ and according to the designer, whether it's a structural designer or architectural designer. There are two types of designer in the project, जिसमें हम थर्ड कोर्स तीसरे रदे में या फोर्थ कोर्स चौथे रदे में ब्रिक को क्या करें, द ब्रिक्स आर रीइंफोर्स्ड विद आयरन स्ट्रैप्स. तो उसकी बेसिकली हमारे साथ जो मतलब लेंथ होती है, ठीक है, वो 25 mm to 28 mm वाइड होती है, ठीक है?
वाइड होती है उसकी, यानी ये इसकी लेंथ होती है, और थिकनेस के मतलब कितनी, यहाँ पे ये बात करते हैं कि 16 थिक होती है, 16 तो क्या इसमें हम 16 सरिया यूज़ करते हैं? 16 तो 12 नंबर 4 है, 16 नंबर 6 सूत्र है, नंबर 6 बार है, 6/8 है, 6 डिवाइड बाई 8 0.75 इंच सरिया का इस पर हम ये यूज़ करते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख ले अगर आपको आता है, तो क्या हम इसमें ये यूज़ करते हैं? बेसिकली ये रेफर करते हैं कि 16 थिक होती है और वाइड इसकी विड्थ जो है 25 to 28 वाइड होती है, लेकिन इस दीवार की जो टोटल थिकनेस 10 सेंटीमीटर है, जो कि 100 के बराबर है, जो कि 3.93 इंचेस के बराबर है। लेकिन इसमें हम स्ट्रैप्स यूज़ करते हैं जो 25 28 वाइड होता है, आयरन स्ट्रैप्स, एंड 16 थिक होती है। लेकिन बेसिकली इसमें जो हम सरिया यूज़ करते हैं और नंबर 3 सूत्र यूज़ करते हैं, नंबर 3 सूत्र 3/8 इंच हम यूज़ करते हैं, ठीक है, 3/8 इंच 0.375। अब आप लोगों ने सोचना है कि 16 इसकी थिकनेस क्या है? ये सरिया की थिकनेस को जाहिर करता है। ये जब ये सरिया पड़ जाता है तो इसकी जो थिकनेस है वो मोटर के साथ है या मोटर के बगैर इसकी 16 थिकनेस है या मोटर के साथ थिकनेस है, ये आप लोगों ने मुझे बताना है इस स्ट्रैप की, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। नीचे ये आपने कमेंट बॉक्स में लिखना है कि विद मोटर इसकी 16 थिकनेस होती है बगैर मोटर की, लेकिन 25 to 28 यानी 1 इंच से 28 डिवाइड बाई 25.4 1.09 इंच, ठीक है। 25 तो 1 इंच है, 28 1.09 इंच इसकी वाइड होती है, 25 to 28 ये वाइड होती है, ठीक है। देखिए मुझसे अगर कोई इंटरव्यू में पूछे कि ब्रिक पार्टीशन वॉल की थिकनेस कितनी है, रीइंफोर्स्ड ब्रिक पार्टीशन वॉल की, तो कोई भी माइक का लाल मुझे इंटरव्यू में नहीं हरा सकता। कोई भी माई का लाल मुझे किसी इंटरव्यू में नहीं हरा सकता। कि अगर कोई मुझसे पूछे कि थिकनेस कितनी है रीइंफोर्स्ड ब्रिक मैसनरी की, मैं उसको कहूँगा 10 सेंटीमीटर, और मुझसे पूछेगा कि इसकी इंचेस में कितनी है 3.93 इंचेस, और मुझसे पूछेगा कि इस पर जो हम आयरन स्ट्रैप यूज़ करते हैं उसकी वो कितना वाइड होता है, 25 to 28 लेकिन मैं साथ साथ ये भी बोलूँगा कि एज पर डिज़ाइन भी ये डिपेंड करता है। ये 25 से ज़्यादा भी हो सकता है, 28 से ये कम भी वाइड हो सकता है, ज़्यादा भी वाइड हो सकता है, 25 से भी ज़्यादा वाइड हो सकता है, और 25 से ये कम भी वाइड हो सकता है। और ये फुल जो इस वॉल की थिकनेस है ये उसकी जितना भी हो सकता है। ये एज पर डिज़ाइन ये डिपेंड करेगा, ठीक है। मैं तो ये कहूँगा उसको इसके अलावा कोई इंटरव्यू मुझसे ये भी पूछ सकता है कि इस पे हम कौन सा स्टील बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कौन सा स्टील बार हम इसमें यूज़ कर सकते हैं रीइंफोर्स पार्टीशन ब्रिक मैसनरी में, ठीक है। मैं सबसे पहले जाऊंगा माइल्ड स्टील के बारे में।
देखिए माइल्ड स्टील बार क्या होता है, ये हमारे पास कार्बन स्टील होता है, ठीक है। ये कार्बन स्टील की इस तरह की टाइप होती है जिसमें हमारे साथ कार्बन की जो कंटेंट है वो लो होता है, ठीक है। अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछे, सिंस these are my skills, but if I have to beat someone and someone asks me in interview कि कार्बन कंटेंट का क्या मतलब है, कार्बन कंटेंट का मतलब है कि इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है, ठीक है। तो अगर कोई मुझसे इंटरव्यू में पूछे कि माइल्ड स्टील बार कौन सा होता है, तो मैं सिंपली उसको यही कहूँगा कि माइल्ड स्टील बार इज अ टाइप ऑफ कार्बन स्टील बार और दैट बार दैट कंटेन्स अ लो लेवल ऑफ कार्बन, जिसमें कार्बन की कम मिकदार होती है, इसलिए इसको हम लो कार्बन स्टील भी कहते हैं, ठीक है। ये जो टाइटैनिक शिप डूबी थी, तो उसमें जो इसमें जो बोर्ड्स लगे थे वो माइल्ड स्टील बार के थे, क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट लो होता है, ठीक है। माइल्ड स्टील बार में जो हम हमारे पास कार्बन जो मिकदार होती है, ये भी इंटरव्यूअर मुझसे पूछ सकता है कि इसमें कितनी परसेंटेज होती है, ठीक है। ये भी मुझसे पूछ सकता है कि इसमें मतलब मेरे साथ कितनी परसेंटेज होती है। तो इसमें जो हमारे साथ जो परसेंटेज होती है वो बेसिकली 0.05 से लेके 0.05 से लेके 0.25 तक होती है, ठीक है। ये हमारे मेरे साथ इसमें इतना परसेंटेज होता है बाय वेट ऑफ कार्बन, बाय वेट इतना इसमें वो परसेंटेज होता है। तो ये मैंने याद करना है इंटरव्यू को बीट अप करने के लिए, ये मैंने याद करना है, ठीक है, कि इसमें कार्बन कंटेंट होता है 0.05% से लेके 0.25 बाय वेट। दिस इज अपोज टू हाई कार्बन स्टील, ये हाई कार्बन स्टील के अपोजिट होता है। दिस इज अपोजिट टू हाई कार्बन स्टील, ये हाई कार्बन स्टील के अपोजिट होता है। अगर इंटरव्यूअर CNW के इम्तिहान में मुझसे ही पूछे कि इसमें कितना परसेंटेज होता है, इसमें कितना कंटेंट होता है, CNW के इंटरव्यू में अगर कोई मुझसे इंटरव्यूअर पूछे, तो उसको मैं यही बताऊंगा कि इसमें मेरे साथ जो परसेंट होता है वो 0.05% होता है से लेके 0.25% होता है। अगर CNW में मुझसे कमीशन की इंटरव्यू में मुझसे पूछ ले कि इसमें कितना कार्बन कंटेंट होता है, कार्बन का परसेंटेज होता है, व्हाट इज कार्बन, ये भी पूछ सकता है मुझसे, तो मैं उसको यही बताऊंगा कि इसमें मेरे पास जो कार्बन कंटेंट है वो 0.05% से लेके 0.25% तक इसमें कार्बन कंटेंट होता है, इसलिए इसको हम लो कार्बन स्टील भी कह सकते हैं। कार्बन स्टील भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। और ये हाई कार्बन स्टील के अपोजिट होता है, विच कैन बी कंपोज्ड ऑफ अप टू 2.5% कार्बन बाय वेट। हाई कार्बन स्टील में मेरे पास जो कार्बन की करंट होती है 2.5 या 2.5 से अबव होती है, ये मेरे पास लो कार्बन स्टील है। इसमें जो कार्बन कंटेंट है वो मेरे पास 0.05% से लेके 0.25% तक होता है आउट ऑफ 100%, इसलिए इसको लो कार्बन स्टील भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड माइल्ड स्टील बार, जो हम आम बिल्डिंग्स में और जो घरों में और छतों में हम यूज़ करते हैं। सो दैट्स व्हाट आई हैव टू से टू देम एंड आई हैव टू क्लियर द इंटरव्यू एज वेल, इंशाल्लाह। So this is what the basics about the concept. So this is skills which I beat the interviewers, of course, and I have give you these skills, and for that you have to remember me at your entire life, at your prayers. तो reinforced brick partition wall में हम माइल्ड स्टील बार यूज करते हैं। अब 6 mm डायमीटर, 6 mm डायमीटर कितने इंचेस के बराबर होता है, ये भी होमवर्क है आप लोगों के लिए, आप लिख लें। कैन आल्सो बी यूज इन केस ऑफ आयरन स्ट्रैप्स, तो ये आप देख सकते हैं, इस ये आयरन स्ट्रैप्स हैं,
ये आयरन स्ट्रैप्स, इसमें हम 6 mm डायमीटर यूज करेंगे। इंटरव्यू मुझसे पूछ लें या मैं आपसे पूछ लूँ, आप पंगा लेंगे मुझसे, तो मैं आपको पूछूंगा कि रीइंफोर्स पार्टीशन वॉल में हम आयरन स्ट्रैप्स कितने mm का यूज़ करते हैं, तो फिर आप लोगों की ठटी निकल जाएगी उस टाइम। डोंट टेक पर्सनल विद मी, ऑलराइट। जब मैं इंटरव्यूअर को बीट अप कर सकता हूँ, सब लोग के सामने बेइज्जत कर सकता हूँ, तो व्हाई नॉट आपकी कौन सी गेट की मूली हो। So you have to appreciate this knowledge which I'm giving you. This is not available in the entire world. So 6 mm diameter can also be used in case of iron straps. So we use iron straps in every third or fourth course and reinforced brick partition wall of 10 centimeter thickness, right? Which is almost half a brick wall. Which is almost half a brick wall. पुख्तू को तुम 4.5 इंच wall वायु partition wall 4.5 इंच जो पाकिस्तान की। The India Bex the Indian software they की 10 centimeter और करे दे और पाकिस्तान के दामू इस्तेमालो 10 दा बराबर 4.5 इंचेस। नो कम आयरन स्ट्रैप दे की इस्तेमालो तो 4.5 इंच आयरन स्ट्रैप पे इस्तेमालो वेट तो our length as per design as mentioned in the BOQ. So the thickness of this type wall, I think this wall is kept equal to half brick. जो फुल ब्रिक होता है इसकी थिकनेस हाफ ब्रिक होता है 4.5 इंच से। इसमें 10 सेंटीमीटर दिखाया गया है इंडिया बैक सॉफ्टवेयर में, जो कि इंडियन सॉफ्टवेयर है, जो कि 3.93 इंचेस का आता है, लेकिन ये बेसिकली होता है 4.5 इंचेस इन पाकिस्तान। We know that in reinforced brick masonry, we're using straps of iron straps that is of 6 mm, right? Mild steel bars of 6 mm diameter can also be used in case of iron straps. So 6 mm is basically 0.236 inches, right? Which is actually when you convert it, when you divide 2 divided by 12, it gives you 0.16 inches. It's not a 2 by 8 inch. It's not a 2 sutar. So when you divide 3 divided by 12, so it gives you 0.25, which is nearly equal to 0.236 inches, right? So it's mean that 6 mm is 3 sutar, 3 by 8 inch, right? When it comes to 8 mm iron strap or 8 mm bar, we can use in reinforced brick masonry is depend upon the designer. So it's actually 0.314 inches. So when you divide 4 divided by 12, so it's almost give you 0.333 inches, which is nearly equal to 0.314 inches. It means 8 mm is number 4 bar. 8 mm is number 4 bar, because but that is into inches, but numbers situation is different. 8 number 4 bar means 4, number 2 bar mean 2 divided by 8, so that is 0.5, and number 1 bar mean 1 divided by 8, so which is 0.125 mm in the inches sutar. Because we talk about 1 sutar is equal to 1 sutar is equal to how much mm. That's a assigned homework for you, a task for you. You guys have to solve out in mm, right? So 1 sutar is equal to how much mm, right here in the comment box. But 1 inch is equal to 8 sutar, right? So when it's come to the numbers, like if I'm talking about number 2 bar, number 3 bar, number 4 bar, so number 2 bar mean 2 by 8, right? Because 1 inch is having 8 sutar. Number 3 bar mean 3 divided by 8, because 1 inch is equal to 8 sutar. Number 4 bar mean 4 by 8, which is number 4 bar 4 sutar. So when number 1 bar mean 1 by 8, so 1 divided by 8, 0.125 inches.
right? 1 by 8 mean number 8 bar, which is 0.125 inches. So now 1 by 8 bar, number 1 bar is equal to 0.125 inch bar. Now number 2 bar, 2 divided by 8 is equal to 0.25. 0.25. So 6 mm is actually number 2 bar, which is nearly equal to 0.236 inch, which is 6 mm is equal to 0.236 inch. But when I convert that into number 2 bar, so number 2 bar, 2 by 8 is equal to 0.25 inch. So number 3 bar, 3 divided by 8, that is 0.375 inch. So number 6 mm is actually number 2 bar, right? 8 mm is actually 0.314 inches, so which is nearly equal to 0.375 inches. So it's mean 8 mm bar is basically number 3 bar, which is 3 by 8 inches, which is equal to 0.375 inches, nearly equal to 0.314 inches, which is 8 mm, right? And number 4 bar is 410, right, which is 1 by 2 inch. So anyhow, the brick masonry done by embedding reinforcement in rich cement mortar is known as reinforced brick masonry. The reinforced may be in the form of steel bars, hoop iron, or wire mesh, right? So today the topic is about a reinforced partition wall. I'll see you in next topic soon. Thank you so much. Allah Hafiz.